Yeah, so in the last lecture we were discussing about the this thing analysis and design of this grid chambers and detritus tank. So in that regard, we have solved one numerical also. We have looked through how the screens are placed, how the head loss through the screen is calculated. Okay, and there were certain design specifications in the grid chamber. So I hope every one of you have brushed up the Stokes law and everything, the coefficient of drag and all, how to calculate those. Okay, so in that regard, yesterday we have solved this particular numerical that was designing of a, this one we have solved yesterday, no? Yes, I'm audible, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. Yes. yeah, so we have solved this particular numerical. So I hope every one of you got the idea about how this is solved. Okay, next is your design of detritus tank. What we haven't discussed yesterday was the design. No, we have discussed it, but there was a certain difference between the grid chambers and design of detritus tank. What is that different? What is that difference? The difference is the shape. If the detritus tank is, if it is constructed or if it is formed in a rectangular channel shape, so that will be your detritus tank. Okay. So this is also basically your grid removal tank itself, but there are a couple of things like if you are providing a rectangular shape to the grid chamber, then you have to look for certain retention time also. Okay, so what are these detritus tanks? How these are designed? We'll study now. So these tanks are basically designed to settle what inorganic particles, and what which kind of inorganic particles? Again, the grit particles, that is the size particles with size greater than 0.2 mm. Okay, and they this thing always pass away the organic particles. Why? Because Stokes law is not applicable over here. Okay, so for removal of these particles, the overflow rate which is taken is approximately 2160 meter cube per meter square per day. Okay, which is calculated using the transition flow. Then the detention time is usually in the range of 30 to 60 seconds. So on a higher side, we always adopt a value generally for 60 seconds, that is around 1 minute. Okay, then horizontal velocity of flow, that is always in the range of 0.15 to zero point 0.3 meter per second. Okay, and since it is a the same open tank and also a rectangular tank, so we have to provide a freeboard also. Okay, why freeboard? Because we have already studied that in order to make the flow in the seaways, we have sewers, we have to always provide a certain freeboard. Even in case of the sewer pipes also, we have studied that we never make the flow as full, completely full. Okay, sewers always flow. How they flow? They will be flowing at a either half full rate or three-fourth full rate, or at times two-third full. Okay, but they won't be 100% carrying 100% discharge on their cross sectional area. Okay, so why this is done? This freeboard is provided over here, over the depth, because of avoiding the overflow. Okay, also since detention time is being provided and you are allowing some time to for the particles to settle down, then you have to increase the length. Okay, increase the length of tank. So the length of tank is approximately increased by how much? 25 to 30%. This is up to you. If you want to design on the higher side, you can consider 30%. If you want to design on the lower shorter side or lower side, you can go for 25% also. Why this length of tank is increased? Because to consider the turbulence at inlet and outlet. सेटलिंग कहाँ होगी तुम्हारी? जब टर्बुलेंस है टैंक में, तो उस टाइम पे सेटलिंग तो होगी नहीं. ठीक, से फॉर एग्जांपल फ्लो No, sir. इक्वलाइजेशन चैम्बर है ना, तो इनलेट और आउटलेट के पास ऑलवेज क्या होगा? इनलेट या आउटलेट पे तुम हमेशा क्या प्रोवाइड करते हो? पाइप्स. Okay, if you are making some liquid flow into the tank and if you are exiting it, making it exit, then how do we enable that? With the help of pipes. Okay, and those pipes, whenever the water will be entering from the pipes or whenever it will be leaving from those pipes, it will create what?
it will create turbulence. Okay, entry के time पे turbulence कहाँ होगा? At the towards the tank side. Okay, और लेकिन direction of the turbulence will be changed. Okay, direction of the turbulence, how it will be changed? Because we all have studied if the cross section of a pipe is reduced. Okay, dia of the pipe is reduced, तो pressure क्या होगा? What will be the impact on pressure and force? Oh, sorry, pressure and velocity. If a dia of a pipe is reduced, then what will be the saying impact on velocity and pressure? No So one. please repeat the question. वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी. Velocity increase होगी. और and what about pressure? Sir, what was the question? If the dia of a pipe carrying a fluid is reduced, then what will be the impact on velocity and pressure? No, sir, velocity will increase and pressure. No, हाँ, velocity will decrease और जो होगा और जो pressure होगा वो बढ़ जाएगा. Pressure अगर बढ़ेगा. diameter छोटा करते हैं तो. How Yes, many sir. of you are saying Come on. there will be an impact on pressure? Yes, how many of Pressure you कम are होगा. saying that there will be an impact on pressure? Velocity, you all are sure about it? Yes, sir. Decrease होगी. See, even in the last semester, I remember I gave you the example of this centralized air conditioning system. ठीक है, जब centralized air conditioning system for example हमारे computer labs में जो हम install करते हैं, ठीक है, तो why मतलब how it is carried out, जहाँ तुम्हारा कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे इस हिसाब से तो अगर तुम एक सिंगल पाइप कैरी कराओगे तो क्या होगा, वहाँ पे तो तुम्हारा वेलोसिटी ज़्यादा है, तो और दूर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एट द एंड ऑफ द रूम इफ यू आर कैरिंग दैट पर्टिकुलर पाइप, तो वहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, तुम्हारा प्रेशर या वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए. तो वो चीज़ कैसे मेंटेन करते हैं हम लोग? तुमने देखा है हर आउटलेट से सेम अमाउंट ऑफ एयर विल बी रिलीज. ओके, हाउ इट इज एनेबल्ड बताया था लास्ट उसमें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. These are very small concepts, and you should make sure that you don't get confused in all these small concepts. Okay. Yeah, so let's not go there, let's stick to the topic. So the length of the tank is increased. Why? So as to consider the turbulence at the inlet and outlet. Okay, तो ऑलवेज इनलेट पे भी क्या होगा, यहाँ पर भी वही सेम फिनोमेना, जब पाइप से पानी एंटर कर रहा है टैंक में इट विल कॉज टर्बुलेंस, और जब पाइप में एंटर कर रहा है एट द एग्जिट तब भी क्या होगा, इट विल जनरेट अ काइंड ऑफ यू कैन से वैक्यूम ओवर देयर. ओके, या फिर force in the opposite direction towards the pipeline. Okay, so that both of these situation will create at those points turbulence, और turbulence जहाँ पे होगा वहाँ तुम्हारा सेटलिंग नहीं हो सकती. सो इन ऑर्डर टू एनेबल दैट सेटलिंग बीच में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ बढ़ा देते हैं टैंक की. लेंथ बढ़ाने से क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद टर्बुलेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा. जब टर्बुलेंस खत्म होगा उस टाइम पे सेटलिंग होगी. ठीक है, सेटलिंग होने के बाद फिर आउटलेट पे से टर्बुलेंस होता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं. ठीक है, सो जो मिडिल जोन है जहाँ पे टर्बुलेंस नहीं है सिर्फ वहाँ पर सेटलिंग होगी इन ग्रिड पार्टिकल्स की. ओके, सो नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ suitable grid chamber cum detritus tank. Okay, whenever this word is there, detritus tank, you have to go for the rectangular grid chamber, or else if you are asked to design a rectangular grid chamber, undoubtedly you have to design a detritus tank only. Okay, don't get confused between both of them. बुक्स में भी बहुत जगह पर ऐसा होगा कि तुम्हें टॉपिक अलग अलग दे रखा होगा, ग्रिड चैम्बर, डेट्रेटस टैंक, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन देम. In some books it is written in bracket only grid chamber in bracket, or you can say detritus tank. Okay, so if you are asked to design a tank for a sewage treatment plant getting a dry weather flow, see over here there is a dry weather flow. Okay, from a separate sewage system at 400 liter per second. So you have to assume the velocity through the tank as 0.2 meter per second and a detention period of 2 minutes. So basically almost everything is given to you. So all you have to do is you have to design this particular tank. So just go for it.
I'll give you 5 minutes. Okay, just solve it. Wherever you get stuck, let me know. Sir, what was the answer to last question? That what will happen if the diameter of pipe is reduced? What will happen to velocity and That pressure? you people should tell me. So I told you now that velocity Just will go and search this particular. decrease. No, I want to hear the answer on both the things. Decrease. What impact on velocity and impact on pressure both. Okay. Tomorrow you in the or whenever the next lecture is, you people will tell me. Sir, velocity will decrease and the uh, other thing will increase. Pressure will increase. Why velocity will decrease? See, consider a very common example. Okay, तुम सब लोगों ने जो flexible pipe होता है गार्डन में पानी लगाया होगा उससे, ठीक है? So at times whenever you want to do what, you want to make your water stream reach at a particular distance plant. So what you will do, you will try to put your thumb on that. Okay, तो वो जो तुम सामने थंब रख लेते हो उसके आउटलेट पे, उससे क्या होता है? उससे तुम्हारा क्या हुआ? क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हुआ. इन अदर वर्ड्स यू कैन से ड्रायर रिड्यूस हुआ या क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हुआ. तो वो जो क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हुआ तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा तुम्हारे पानी के स्ट्रीम पे? डिस्चार्ज पे कोई फर्क पड़ा? नो सर. ठीक है. वेलोसिटी पे फर्क पड़ा? हाँ. वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा? अभी तुमने इंक्रीज हुई वेलोसिटी. यस सर. ठीक है. अब तुम मुझे बता रहे हो, जस्ट तुमने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था कि वेलोसिटी कम हो जाएगी. नाउ इफ यू आर सेइंग कि वेलोसिटी कम हो रही है तो वहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी. ठीक है. सो गो थ्रू इट. ओके, go through it and then we'll be discussing. There's no point of discussion in one way only. Okay, so start this solving this numerical. See, what is the most important thing here? The length of the tank. Okay, so first aim for the appropriate length of the tank. Now in order to calculate length of the tank, what you should do, length कैसे निकालोगे? फ्लो वेलोसिटी तुम्हें ऑलरेडी दी हुई है. ठीक है, फ्लो वेलोसिटी दी है. एंड व्हाई यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ? जस्ट नाउ यू हैव स्टडीड इन ऑर्डर टू एनेबल सर्टेन डिटेंशन जोन. ठीक है, एक डिटेंशन जोन बनाने के लिए हम लोगों ने ये किया. ठीक है, तो एज पर योर डिजायर्ड थिंग, व्हाट यू विल से डिजाइन, लेट्स से डिटेंशन टाइम हमारा है तुम्हारा 60 मिनट्स. ठीक है, अब तुम्हें ये नहीं पता कि डिटेंशन जोन की लेंथ क्या है. So how you will decide the zone of detention length? Oh sorry, length of detention zone. Detention zone की length कैसे decide करोगे? देखो, detention time तुम्हें मालूम है 60 seconds लेते हैं. अरे at least say yes or no. I'm not able to hear you, any of you. Am I audible? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, देखो स्टार्टिंग से देखो. ठीक, सबसे पहले तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है डेटाडिस टैंक में? लेंथ ऑफ द टैंक. ठीक है, लेंथ निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? लेंथ कैसे निकालोगे? एनी आइडिया? यू नीड टू फर्स्ट नो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. ठीक है, वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है. डिटेंशन टाइम तुम्हें पता है कि ऑन द हायर साइड यू टेक इट 60 सेकेंड्स. ठीक, तो कैसे निकालोगे? वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो क्या आता है? डिस्टेंस आ जाता है. वही डिस्टेंस तुम्हें निकालना है. वही जो डिस्टेंस आएगा वही लेंथ हो गया तुम्हारा टैंक के लिए. लेकिन द पॉइंट ओवर हियर इज कि वी हैव टू प्रोवाइड एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द टैंक. ठीक है, एक्सटेंडेड लेंथ हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? अब एक्सटेंडेड लेंथ हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे, मान लो डिटेंशन टाइम तुमने 60 सेकेंड अज्यूम किया. ठीक, तो उतना डिटेंशन टाइम बेसिकली 60 सेकेंड्स में जो तुम्हारा फ्लो हो रहा है वो सिर्फ वो जोन है जो तुमने एक्सटेंडेड जोन प्रोवाइड किया. ठीक, बाकी टर्बुलेंस के लिए तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो? अगर तुमने सिर्फ 60 सेकेंड्स के हिसाब से लेंथ प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा? तो उस जोन में ही टर्बुलेंस जोन भी आ गया, उसी में डिटेंशन भी हो गया. तो इन इफेक्टिवनेस डिटेंशन टाइम तो तुम्हारा कम हो गया. तो व्हाट वी विल डू, वी विल डबल द डिटेंशन टाइम.
ठीक है, डिटेंशन टाइम को डबल कर देंगे। डिटेंशन टाइम डबल करने से क्या हुआ, जो डिटेंशन जोन की लेंथ है वो बढ़ गई। आर यू पीपल गेटिंग इट और नॉट? हाँ सर, टाइम Yes, sir. See, just a minute, I'll show you. See, this is your inlet, okay, this is your outlet। इसको रफ डायग्राम समझ लो। अब इनलेट से आउटलेट तक जो तुम प्रोवाइड करोगे ये तुम्हारी कंप्लीट लेंथ है, ठीक, दिस इज योर कंप्लीट लेंथ एल। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ से तुम्हारा पानी एंटर किया, यहाँ पे टर्बुलेंस होगा, इस पर्टिकुलर जोन में देयर विल बी टर्बुलेंस। ओके, देन एट पॉइंट 2 यहाँ पर भी टर्बुलेंस होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तुम्हारा एम क्या है, लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम तुम्हें पता है कर दोगे। टाइम कौन सा लोगे तुम, okay, in the question it is already given detention period of 2 minutes. None of you is telling me. See, if it is given in the question, that is very good. अगर नहीं दिया होता detention period, तो what is the detention period you people take, that is 60 second. So उसके बाद हम लोग एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, ठीक। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लेते हैं, इस टर्बुलेंस जोन को काउंटरैक्ट करने के लिए या एनेबल कराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेंशन पीरियड ऑलरेडी 2 मिनट्स दिया हुआ है, तो सीधे सीधे निकल आएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी इनटू द टाइम डिटेंशन पीरियड, ठीक है। सो जस्ट मल्टीप्लाई 0.2 इंटू व्हाट 120, ठीक है। तो लेंथ आ गई, व्हाट इज द लेंथ यू आर गेटिंग, yes, anyone who has got the length after multiplying 0.2 into 120, that is 24 meters. None of you got 24 meters length? Yes, sir. 24 hours. बेटा बोलो ना, क्या हो गया तुम लोगों को आज? Okay, now it is already given that dry weather flow condition is there and separate sewerage system is there. Okay, so we will assume that each tank is being designed for dry weather flow condition. Okay, so what is the discharge passing through each tank? This is a separate sewerage system, right? So what is the discharge passing through each tank? That is 400 liters per second. Convert it into meter cube per second. 0.4 हो गया, 0.4 meter cube per second. Okay, so what is the cross sectional area required over here? क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं पूछूं तो कैसे निकालोगे, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी, Q इज इक्वल टू AV यूज कर लो, ठीक है। सो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया यू आर गेटिंग, हाउ मच यू आर गेटिंग एरिया, वेलोसिटी इज गिवन टू यू 0.2, डिस्चार्ज इज गिवन टू यू, मतलब तुमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, 2 meter square. okay, cross sectional area is 2 meter square. Now you have 2 meter square cross sectional area, you have length as 24 meter. Okay, then what is remaining, the depth of the water tank. Okay, depth of the water tank is remaining. So see, we'll go back to the design criteria. Depth of the water tank is approximately 1 to 1.8 meters. Okay, so you can consider between in between somewhere around 1.5. So you can assume as 1.5. ठीक है, तो डेप्थ को 1.2 1.5 जितना भी कंसिडर करना चाहो कंसिडर कर सकते हो एज पर योर विश। ओके, so once you will get the depth, क्या बचा निकालने के लिए, लेंथ निकल आया, डेप्थ निकल आया, देन व्हाट इज रिमेनिंग, Width. yes, you will calculate the width of the tank. Okay, width निकालने के लिए area upon depth, so you will be getting the width also. So in total you will be getting the all the 3 dimensions of a dead test tank.
and whatever depth you are getting, at last you have to provide a freeboard of 0.3 meters. Okay, now after providing freeboard, there is one more thing. Once you'll settle down the this thing, collection of detritus, even for the collection of detritus you will require what? You will require a certain depth. Okay, so 0.3 मीटर तुमने फ्री बोर्ड दिया है, 0.3 मीटर तुम लोग कलेक्शन के लिए डेड स्पेस दे दो. ठीक है, तो डेड स्पेस डेप्थ तुम्हारा हो जाएगा कितना, वो भी 0.3 ऐड कर दो. सो इन टोटल ओवरऑल डेप्थ विल बी फ्री बोर्ड प्लस dead space depth plus the entire depth which you have calculated, that was कितनी assume की थी 1.5 ही assume किया था ना तुमने. Yes, sir. Yes, sir. Yes, so in total you'll be getting the entire the thing parameters, all the parameters of the detritus tank. See this, all these, you know, what you'll say, all these structures, okay, all these components, these are what? These are the design questions, or you can say design numericals. Okay, so while designing as a design engineers, all the values may vary. See, one of you might have, you know, assumed the depth 1.5. One of you might have taken one of you might have provided detention time on the lower side. यहाँ पे तो detention time दिया हुआ था, mentioned है. अगर नहीं दिया होगा, some of you might take it as 0.45 second, then 45 second, or some of you might take say 50 seconds or 60 seconds, कोई higher side में ले लेगा. ठीक, so that is up to you. So don't worry about matching the answers and all. Okay, but the concept should be clear in all the design questions. Just focus on the concept. Okay, if you are applying the correct concept, if you are applying the correct checks, then there is no need to worry about. ठीक है, यहाँ पर कोई चेक अप्लाई नहीं कर सकते हो तुम, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो. डेट्रिटस टैंक के केस में कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा? कॉन्सेप्ट है तुम्हारा एक अप्रोप्रिएट डिटेंशन जोन प्रोवाइड करना. ठीक है, और डिटेंशन जोन अप्रोप्रिएट कैसे प्रोवाइड कर पाओगे तुम? जब तुम प्रॉपर डिटेंशन लेंथ, या तुम लेंथ ऑफ द टैंक जो है सबसे मेन पैरामीटर है. ठीक, इट डजेंट मैटर डेप्थ तुम्हारी कितनी है कितनी नहीं है. अगर डेप्थ तुम्हारी कम भी होगी और लेंथ सफिशिएंट है तो क्या होगा? at the even at the end of the tank the particle will settle down. ठीक है, ये जो लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाया था प्रोजेक्टाइल मोशन, डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन में. ठीक है, दैट पार्टिकल सेटल डाउन. Okay, so I hope this is clear to you. Is there any doubt in this? Yes sir, वो लास्ट में टोटल डेप्थ आपने कैसे एक बार कैलकुलेट किया था वो और बता दो. See, just look at the solution. Okay, total depth means एक अगर टैंक है तुम्हारा, okay, if this is your tank, so ये तुम्हारा फ्री बोर्ड दे दिया तुमने 0.3. ठीक, इतना तुमने फ्री बोर्ड दे दिया. देन ये तुम्हारा डेप्थ ऑफ द टैंक हो गया. ठीक, और एडिशनल जो डेड स्पेस देते हैं हम लोग, जैसे फ्री बोर्ड देते हैं ओवरफ्लो अवॉइड करने के लिए, वैसे ही डेड स्पेस भी देते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेट्रिटस. ठीक है, जो भी ग्रिट रिमूव होगा, जो भी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक, वो क्या होगा? दे विल बी डिपॉजिटेड एट द बॉटम. और अगर ये डिपॉजिट होता जा रहा है तो क्या होगा? आफ्टर वन टाइम इट विल बी, आफ्टर एट एन इंस्टेंट व्हाट विल हैपन? दिस विल ऑक्यूपाई अ सर्टेन डेप्थ. और अगर ये एक पर्टिकुलर सर्टेन डेप्थ ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये पूरे टैंक की जो डेप्थ है उसको रिड्यूस कर रहा है. सो देयरफॉर वी यू नो व्हाट विल से on a higher side basically. In order to enable this facilitate the thing collection of the detritus, we always provide what? We provide the detention depth or dead space depth, you can say. Okay, so addition of all these three depths will give you the total depth. Okay. Okay, now once your wastewater passes through your this thing flow equalization chamber, detritus chamber or grit chamber, then
finally it is sent to the primary settling tank or primary sedimentation tank, or in some books it might be written primary clariflocculator. Okay, so all these are same thing. The primary settling tank, we all know the motive, the purpose of sedimentation tank, that is in order to what, settle down, make the additional or whatever remaining particles, impurities are there, to settle down those impurities. Okay, so in PST or primary settling tank, the overflow rate of the tank varies between 25 to 30 meter cube per meter square per day. This is your what, average value, and 50 to 60 meter cube per meter square per day, that is your peak value. So ओवरफ्लो रेट इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक, एवरेज और पीक वैल्यू के बीच में, समवेयर इन बिटवीन हम लोग डिजाइन करते हैं, कंसिडर करते हैं ओवरफ्लो रेट. Okay, then plan area of the tank is completely using both the rates and maximum value is adopted, that is total discharge जो हम लोग consider करते हैं, that is Q average, which is 1/3 of the peak discharge. Okay, then depth of the tank is taken in the range of 2.5 to 3.5 meters. Detention time for PST is a bit high, is on the bit of higher side. Why? Because the particle size is quite small. So over here we have to what, we have to wait for the particle to settle down. Okay, so detention time is in hours over here, that is 2 to 2.5 hours. Then horizontal velocity of the flow, that is we have to ensure it is around 0.3 meter per minute. Okay, and width of the tank, the width to L by B ratio, that has to be kept in the range of 4 to 5:1. Okay, that means width should be almost half than the the length of the plane sedimentation tank. Okay, so see, these are all the design specification you have to memorize yourself. So unless you are knowing all these design specification, you cannot design any this thing, any of the component. Okay, you have to memorize all these. Like in Detritus tank, we know that the detention time taken is 60 seconds. So in case if that is not given in the question, you can directly take 60 seconds. But in case of primary sedimentation tank, it is 2 to 2.5 hours. So if you are asked to design a primary sedimentation tank, nominally you have to provide, on the lower side you can provide 2 hours, on the higher side you can provide 2.5 hours. But providing less than 2 hours will not serve the intended purpose. Then the discharge also, okay, the overflow rate which is considered, that is also important thing. Like then one more thing, the horizontal velocity of flow, that has to be made sure. Like in case of Detritus tank, the velocity of flow was around 0.2 meter, 0.2 meter per second, and over here it is 0.3 meter per minute. Okay, so these are the things we have to make sure. Okay, yeah, there is one more thing, the sedimentation tank in which the type 3 and type 4 settling take place. What are these type 3 and type 4 settling? These were zone and compression settling. Okay, जो हम लोगों ने 4 टाइप की settling पढ़ी थी. Yes, sir. So these were the settling. So these are designed for solid loading rate, SLR. Okay, and they are checked for surface overflow rate, SOR. What are these SLR and SOR? As of now, just consider this, that surface overflow rate, SOR, is your settling velocity. Okay, जो भी तुम्हारी settling velocity है, that is your surface overflow rate. And what is solid loading rate? That is the suspended solids, which are organic suspended solids, into the discharge. That is the entire discharge which is taken as, and the suspended solids, the content of suspended solids which are which are considered to settle down. Okay, as of now, just consider this. What are these SOR and SLR? There is an entire topic we'll discuss further about these. Okay, so using these particular design specification, you can easily design a primary settling tank. So just go through questions on your own for these primary settling tank, and we'll discuss in the next lecture the remaining questions, and if there is any problem regarding design of PST. In the same way, जैसे तुम लोगों ने Detritus tank का design किया, वैसे ही PST का भी design करना है. The only things that you have to keep in mind is the design specification. Okay,
in none of the book you'll be finding design specification written like this. So don't search in the books like that you might get, don't suppose that you might get like this only. Okay, एक साथ लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा. So this is the thing, either you can use these summaries or you can go through the entire books and you can make your own design specification, but the steps are same. स्टेप्स कैसे सेम है, डिटेंशन टाइम पता होना चाहिए. ठीक, कंसिडर डिटेंशन टाइम, अगर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो पता होना चाहिए. फिर हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी पता होनी चाहिए. कितने अमाउंट के लिए डिस्चार्ज के लिए तुम डिज़ाइन करोगे. सी देर आर, अगर डिस्चार्ज की बात करो तो हमेशा यू हैव एवरेज वैल्यू ऑल्सो, यू हैव पीक वैल्यू ऑल्सो. ओके, लेकिन डिज़ाइन डिस्चार्ज कौन सा कंसिडर करोगे, एवरेज और पीक. सो इन सम केसेस सी, जैसे पुराने इसमें हम लोगों ने और कंपोनेंट्स पढ़े थे तो उसमें किसी में एवरेज वैल्यू डेजिग्नेट करते थे, किसी में पीक वैल्यू के लिए डिज़ाइन करते हैं. बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1/3 ऑफ द पीक के लिए डिज़ाइन करते हैं. ठीक, सो दैट इज़ वन थिंग. So just keep all these things in mind and solve the numericals.